आज की क्लास हमारा जो है 12th क्लास के लिए सब्जेक्ट आप पहले ही जानते हैं, हमारा जियोलॉजी सब्जेक्ट है और जिसको हम अर्थ साइंस के नाम से भी जानते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोल्ड्स। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फोल्ड्स? नो डाउट in the 11th class we have discussed the fold and the types of fold in the form of anticlinal fold, which is a simple fold, synclinal fold, which is just like this type of a fold. So इनको हम anticlinal fold कहते हैं और इस जो डाउनवर्ड मूवमेंट जहाँ पे हमारा फोल्ड में ट्रफ बन जाता है उसको हम सिंक्लाइनल फोल्ड कहते हैं। लिहाजा फोल्ड हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया है। द फोल्ड्स और द वेवी अंडुलेशंस आर कर्व्ड और zigzag structures of rocks. So folds are the zigzag structures of rocks which get deformed in the shape of crusts and troughs and appear or resembles with the structures of the waves. So these rock structures have the same resemblance with the shape of the waves in the form of crusts and troughs. The crust part of the fold is known as anticlinal fold, while as the trough side of the fold is known as synclinal fold. So when we try to understand what is anticlinorium and then next is the synclinorium. These are the two types of folds, anticlinorium and synclinorium. An anticlinorium is a large anticlinal, just like anticlinal fold, but it has a number of smaller folds, secondary folds, which developed within one fold. So only the difference is the anticlinal is just the anticlinal orbit in which the crust is formed upward fold. This is an upward fold. Similarly, anticlinorium is upward fold. Only the difference in anticlinal, basically this anticlinar fold is large anticline. Basically this is large anticline, this anticlinorium, with a number of secondary folds. There are a number of secondary folds by a smaller size developed within one anticline fold, that is known as anticlinorium. In other words, in a simple words, we can define anticlinorium. In other words, word anticlinorium is a system of exceptionally large sized anticline. This is large sized anticline on which minor folds are superimposed. Simple. Similarly, synclinorium is the reverse. Synclinorium is the reverse of anticlinorium. Synclinorium is reverse of anticlinorium. This is anticlinorium and its reverse is synclinorium. Clear? And may be defined as extensive system of fold having clearly downward synclinal folding trend. This has a synclinal fold. It is similar in anticlinorium. It has also minor folds in it, secondary folds in it. Only the difference is this is in the shape of anticlinal form and this is in the synclinal. In an anticlinal you know the crust, whereas in synclinal there is trough. Anticlinorium you have understood this. Synclinorium is the reverse of this anticlinorium. So anticlinorium in other words synclinorium fold
we define as it is a Lorentz syncline. It is a Lorentz syncline, just like this Lorentz syncline. It is a Lorentz syncline with number of smaller folds, with number of smaller or secondary folds. Simple. If we try to understand in a simple way, in simple language, ये जो इंटरक्लाइनोरियम होता है सिमिलर एंटीक्लाइन होती है. बेसिकली एंटीक्लाइनोरियम एक एंटीक्लाइनल फोल्ड होता है. अगर हम इस तरह से आपको दिखाएंगे कि ये एक सिंपल सा क्लास है, जस्ट ये एक एंटीक्लाइन होता है एंटीक्लाइनोरियम. इस एंटीक्लाइन फोल्ड में क्या है, बस इतना ही है. इसमें और इसमें ये एंटीक्लाइन ओनली लाइन, हियर इज लाइनोरियम. लाइन और लाइनोरियम में इतनी फर्क है. ये जो एंटीक्लाइन होता है सिंपल अपवर्ड मूवमेंट जो रॉक्स में होती है स्ट्रक्चर्स में, यहाँ भी रॉक्स में अपवर्ड मूवमेंट, यहाँ भी क्रस्ट बन जाता है, यहाँ भी क्रस्ट बन जाता है. एंटीक्लाइन और ये बेसिकली एंटीक्लाइन ही होती है, लेकिन फर्क इतना है स्मॉलर एंड नंबर ऑफ सेकेंडरी फोल्ड्स और ऑफ स्मॉलर साइज और डेवलप्ड विद इन द फोल्ड. इसमें सिर्फ जो ये सेकेंडरी फोल्ड्स की डेवलपमेंट जो होती है, दैट इज वाई इसको ये एंटीक्लाइनोरियम कहते हैं. वाइल एज ये एक एंटीक्लाइन ही होता है, बस सिंपल सा है. इसी तरह से अगर हम बात करेंगे सिंक्लाइनोरियम की, ये एक बजाते खुद सिंक्लाइन ही होती है. सिंक्लाइन LINE लाइन सिंक्लाइन ही होती है. फर्क इतना ही है, यहाँ पे छोटे छोटे सेकेंडरी फोल्ड्स डेवलप हो जाते हैं इस सिंक्लाइन में. इन जो सेकेंडरी फोल्ड्स की वजह से इसका नाम, इसको हम सिंक्लाइनोरियम कहते हैं. So, when within one fold of anticline fold, there are smaller number of secondary folds which are developed in one anticlinal fold, that is known as anticlinorium. And in synclinorium is the reverse of anticlinorium, and in synclinorium it is a type of synclinal fold where a smaller number of secondary folds are developed within the one syncline fold, that is known as synclinorium fold. So these are the two types of folds, anticlinorium, synclinorium. Anticlinorium has been derived from anticline. Only the difference is there is number of secondary small number of smaller size of folds which are developed, smaller number of folds secondary which are developed. And synclinorium is reverse of anticlinorium. That is what means ki this is a syncline type of fold, but smaller size of secondary folds are developed within one synclinal fold. So this is the topic regarding the types of folds, anticlinorium and synclinorium. They can be easily understood with the help of these two figures.